Hello friends, I welcome to my YouTube channel Let's Educate. Today's I Sanjeev I presenting the business studies class 11 ch- chapter first. First chapter is nature and purpose of business. Firstly we are introducing the introduction. हम introduction से start करते हैं. Introduction. All human being were may require different types of goods and services to satisfy their need. It means हर इंसान को अपनी ज़रूरतमंद की चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे फल, सब्जी या खाने की चीज़ें या सामान या सर्विस, मोबाइल रिचार्ज, इंश्योरेंस टू दी सेटिस्फाई देयर ह्यूमन नीड्स. बिजनेस इज़ अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन मॉडर्न सोसाइटी. इसमें बिजनेस बिजनेस में हम एक अर्थव्यवस्था की एक्टिविटी हम इसमें देख सकते हैं, जैसे कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ सेल एंड गुड्स. इट मीन्स you can say the sale of goods and service required by the people. It's aim at earning money by satisfying human needs in business. Meaning of the business are first is literal meaning of the business is busy, and business is defined as the economic activity involved in the production of sales and goods and services undertake the with the motive for earning profit. And last point by satisfying the human needs in the society. And characteristics of business activities are first an economic activity. It means an mainly activity aimed at earning money. Business is also aimed at earning money or livelihood by satisfying human needs. The second point is production and procurement of goods and services. Every business enterprise must either manufacture of goods and services or it requires from producers. Good may be a consumer goods, a capital goods. Service means facility offered to consumer like banking and insurance, etc. Third point is sales or exchange of goods and services. Business involve transfer of exchange of goods or services for value. Dealing in goods and services on a regular basis. Dealing in goods and service on a regular basis. It should be a regular activity. One time sale or exchange will not be considered in business. This means that business should be a regular period, not some one day you get from a pen and you sold to your friend and you said that this is business. This is not business. Business means regular reoccurring, बार बार हमें करनी पड़ेगी एक ही एक्टिविटी को, उसको हम बिजनेस कह सकते हैं. प्रॉफिट अर्निंग होनी चाहिए हमारा बिजनेस ऑलवेज एम एट अर्निंग प्रॉफिट. थर्ड पॉइंट सेकंड लास्ट पॉइंट है अनसर्टिनिटी ऑफ अर्निंग. इट मीन्स देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी of less amount of profit or even a loss in a business. Element of risk. There is always a possibility of certainty of earning. This is the element of risk. Next point is comparison of business एंड एम्प्लॉयमेंट. हम बेसिस में होंगे इसमें. और सेकंड कॉलम हमारा बिजनेस का, यू सेड इट. एंड थर्ड इज प्रोफेशन एंड फोर्थ इज एम्प्लॉयमेंट. हाउ टू स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट बेसिस इज हाउ टू स्टार्ट. बिजनेस आर स्टार्ट बाय द ऑनर या एंटरप्रेन्योर से होता है. और गेटिंग प्रोफेशनल का होता है गेटिंग मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी. एम्प्लॉयमेंट होता है गेटिंग एन अपॉइंटमेंट लेटर. what is the its nature. बिजनेस का है प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस टू पब्लिक. प्रोफेशनल रेंडरिंग ऑफ प्रोफेशनलाइजिंग एक्सपर्ट सर्विसेज. एम्प्लॉयमेंट है परफॉर्मिंग गुड्स वर्क्स एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट. क्वालिफिकेशन हमें चाहिए. बिजनेस में नो क्वालिफिकेशन से रिक्वायरमेंट हो सकती है, पर जो प्रोफेशनल है उसमें हाईली क्वालिफाइड हमें वो ट्रेनिंग चाहिए और स्पेसिफाइड फील्ड में रिक्वायर क्वालिफिकेशन चाहिए. और एम्प्लॉयमेंट में हमें रिक्वायर क्वालिफिकेशन और एज वेल एज ट्रेनिंग भी चाहिए. फोर्थ इज रिटर्न. व्हाट विल यू गेट इन बिजनेस. यू गेट द प्रॉफिट. प्रोफेशनल में हम फीस लेते हैं, सैलरी एम्प्लॉयमेंट हमारा सैलरी लेता है. कैपिटल. हाउ मच यू नीड टू स्टार्ट. रिक्वायर बिजनेस में हमें ज़्यादा चाहिए कैपिटल, और प्रोफेशनल में थोड़ा कम चाहिए बिजनेस से. पर जो लेबर एम्प्लॉयमेंट है या वर्कर है उसको कुछ भी नहीं चाहिए. नो कैपिटल रिक्वायर्ड. रिस्क इन्वॉल्व है. सबसे ज़्यादा रिक्वायर हमारा रिस्क होता है हमारे बिजनेस को, थोड़ा कम होता है प्रोफेशनल को, और कोई भी रिस्क नहीं होता एम्प्लॉयमेंट को या वर्कर को. ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट. वहाँ बिजनेस में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं हमने. इंटरेस्ट इज़ पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़. और हम प्रोफेशनल में नो पॉसिबिलिटीज़ है और वर्कर में भी नो पॉसिबिलिटीज़ है. यू सेड द एम्प्लॉयज़ है नॉट पॉसिबिलिटी. कोड ऑफ कंडक्ट. 8 है नो कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय फॉर बिजनेस. प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड.
प्रोफेशनल को भी फॉलो करनी पड़ेगी कोड ऑफ कंडक्ट को, और कोड ऑफ कंडक्ट is prescribed by the employer to the followed. Next point is classification of business activities. We have third point, classification of business activities means industry, commerce and business. We discussed this point in this chapter. The business classification of business activity: business, industry and commerce. Industry, production or processing of goods. Industry means production or processing of goods and services. Industry means production or process of goods and services. It concerned with changing the form of the product. It gives from utility product. It classified into following. इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड मीन्स जो हमारा इंडस्ट्री है उसका फर्स्ट काम तो है प्रोडक्शन करना है या प्रोसेसिंग करना है गुड्स या सर्विस, या इट कंसर्न विथ चेंजिंग द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट. It gives the from utility to the product. It is classified into following. Industries are three types. First is primary, second is secondary, third is tertiary. Primary means एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हम इसमें नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन की बात करेंगे एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स. इसमें हम एग्रीकल्चर यू सेड द एग्रीकल्चर सेक्टर भी हम प्राइमरी कह सकते हैं. एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्शन एंड नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स है. सेकेंड इज प्रोसेसिंग मटेरियल गॉट इनटू प्राइमरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी में हम प्रोसेसिंग करेंगे मटेरियल गॉट इन द प्राइमरी, जो हमें प्राइमरी से मिलेगा हम इसको यहाँ सेकेंडरी में लाएंगे. टर्चरी मीन्स सपोर्ट द सर्विस टू प्राइमरी एंड इंडस्ट्री. टर्चरी का मीन्स है सपोर्ट करेगा प्राइमरी और सेकेंडरी का. फर्स्ट आप प्राइमरी आर ऑल्सो आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मीन्स माइनिंग, lumbering, hunting and fishing operation. These are the extractive industry. And genetic industry means breeding plants and animals, poultry farms and fish hatch. These are the primary industry, and these are two types. First is extractive and second is genetic. And first is secondary also are two types. First is manufacturing industries and constructive industry. Manufacturing industries are production and processing of goods and services, are goods creating from utilities. Consumer industry means construction of building, dams and bridges. This is a construction industry. And manufacturing industry means production and processing of goods creating from utilities. मतलब जो हमारे पास सामान है उससे हम कुछ या प्रोडक्शन करेंगे या प्रोसेस करेंगे, ये हमारा हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो आर four types. First is analytical industry, second is synthetical industry, third is processing industry, fourth is assembling industry. Analytical industry means separate different elements from the same materials. इसमें सेपरेट करना, हमें एक ही सामान से जो मिलता है उसको हम अलग अलग निकालना है, अलग अलग चीज़ें निकालना है, उसको हम एनालिटिकल इंडस्ट्री कह सकते हैं. जैसे क्रूड ऑयल से हमें पेट्रोल और डीजल भी मिलता है, केरोसिन भी मिलता है और चारकोल, यू से दैट ग्रीस ऑल्सो मेड बाय फ्रॉम बैरल कच्चा तेल, यू से डेट. एंड सेकेंड पॉइंट इज सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में कंबाइंस वेरियस इंडिग्रेंट. सिंथेटिकल में हम कंबाइन करेंगे डिफरेंट वेरियस इंडिग्रेंट के. एग्जांपल सीमेंट, टेक्सटाइल, दिस आर द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिकल इंडस्ट्री. प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मीन्स इन्वॉल्व सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़. इस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सीरीज होगी, इसमें बहुत सारी सीरीज, तब जाके हमें यहाँ फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा लाइक पेपर एंड शुगर्स. असेंबली इंडस्ट्री होगा हमारा, असेंबली डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, जैसे असेंबल करेंगे, मतलब इसमें ज्वाइन करेंगे एक सारे सामान अलग अलग जगह से लाके एक जगह पे जोड़ेंगे, तो उसको हम असेंबली इंडस्ट्री कहते हैं. लाइक टेलीविज़न, कार, कंप्यूटर, मोबाइल, etc. You know about the industry. And second point about commerce. It's include all those activities which are concerned with removing all the hindrance in the movement of goods from the manufacturer to the consumer. It includes the following activities. It commerce means it include all those activities which are concerned with removing the hindrance in the movement of goods and service. इसमें कॉमर्स का मतलब ये होता है कि हम रिमूव करेंगे all the problems from that goods can be moved to the consumer without any problem. It includes the following commerce. Commerce are two types: industry and trade.
कॉमर्स आर इन इंडस्ट्री एंड ट्रेड, कॉमर्स के अंदर ही हमारा इंडस्ट्री भी है और ट्रेड भी है। कॉमर्स को हम इंडस्ट्री को हम आगे अभी पढ़ चुके हैं, तो हम फर्स्टली हम यहाँ देखिए मटेरियल्स इंडस्ट्री, second is industry. Commerce include the following activities. First is industry, trade, export and import. These are the under the commerce. Third is transport and communication. Fourth is banking. Fifth is insurance. Sixth is advertisement. Seventh is packaging. Eighth is warehousing, etc. Trade means exchange of goods and service between the seller and buyer with the profit or motive of profit. Types of trade are internal trade and external trade. There are two types of trade. In internal trade, the wholesale trade or retail trade. In external trade, there is import, export, and interport trade. These are the three types of external trade and two types of internal port. And next point is luxuries to trade. Luxuries to trade means first is transport and communication, physical movement of goods from the place where there is a no demand to the place where there is a demand, creates place to product. Means transport can help, communication help can, for some time there will be no need of something in different place, and there is a in another place they have a high demand, so the transport can help in transport this product from where there is a demand. Second is banking and finance. हेल्प बैंकिंग एंड फाइनेंस हेल्प इन रिमूविंग द फाइनेंस रेडरेंस, जिसको पैसों की कोई दिक्कत या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उसको यह सॉल्व करता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। फैसिलिटी प्रोडक्शन, बाइंग, सेलिंग, प्रोवाइडिंग फंड बाय वे ऑफ लोन्स, लोन्स भी प्रोवाइड करता है हमारा। थर्ड इज इंश्योरेंस, इट फैसिलिटेट बिजनेस बाय इंश्योरिंग कंपेंसेशन फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिस्क, इंश्योरेंस कवर करते हैं हमारे रिस्क को। वेयर हाउसिंग, इट कीप्स द गुड्स इन टैग टिल द दे डिमांड, वेयर हाउस मतलब गोदाम होते हैं जिसमें हम सामान अपना संभाल के रखते हैं, जब हमारी डिमांड आती है तब हम वहाँ से निकाल के बेचते हैं। तो एडवर्टीजमेंट, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इट इंडस्ट्री induces the consumer to buy. It means advertisement means there should be a proper guidance. You in advertisement can help in popularity of product and increase the sale by knowing your product to other persons. Industry, first is role of profit in business, it is a source of income for the businessman, it provides funds for expansion। रोल ऑफ प्रॉफिट है इन बिजनेस में, इसका मतलब यह है कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम एक तो बिजनेसमैन के लिए। दूसरी बात यह है कि इसमें इट प्रोवाइड्स फंड फॉर एक्सपेंशन, इट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ इफिशिएंसी ऑफ बिजनेसमैन, इट बिल्ड अप आर रेपुटेशन। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर, फर्स्ट इज इनोवेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का मतलब है पहला है इनोवेशन, प्रोडक्टिविटीज़ फिजिकल एंड फाइनेंशियली, थर्ड हो गया। फोर्थ है हमारा अर्निंग प्रॉफिट, फिफ्थ है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, सिक्स्थ हमारा है इसमें वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, सेवन्थ हमारा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस रिस्क, इट रेफर्स टू अ पॉसिबिलिटी ऑफ inadequate profit or even loss due to uncertainties or expected events। nature of business, nature of business risks are, first business risks arise due to uncertainties, second is risk is a essential part of business, third is degree of risk depend upon the nature and size of business, fourth point is profit is the reward for risk taking, प्रॉफिट हमारा रिस्क टेकिंग का ही रिवॉर्ड है। causes of business risks are first nature causes, natural causes means risks made due to flood, earthquake, lightning, heavy rains, these are the causes of natural causes। second is human causes, it include dishonesty means धोखाधड़ी, it include dishonesty, carelessness, लापरवाह and negligence of employees, strikes or riots, it are example of human causes। third is economic causes means it includes certain relating to demand for goods, competition, price, collection of dues from customer, change in economic policy। other causes, it includes potential distribution or mechanical failures, etc।
next point is basic factor to be considered बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस. हमें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें कौन से बेसिक फैक्टर हमारे दिमाग में से. फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, कि हमारा बिजनेस किस चीज़ का है. सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट इन द मार्केट. हमें ये देखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है मार्केट की, नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस टू बी सिलेक्टेड. सेकंड इज साइज ऑफ द फर्म. व्हाट इज योर साइज ऑफ द फर्म based on the amount of fund available and demand for the product in the market. Size of the firm, small scale or medium or large scale to be decided. The थर्ड पॉइंट इज चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप. कौन सी तुम ओनरशिप रहना चाहती हो. जैसे बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड लीगल फॉर्मेलिटीज टू बी फिल्ड, अ लायबिलिटी बाय ऑफ द ओनर्स, etc. The form of ownership is to be decided. Third is location of the business enterprises. Location. Fourth point is location. Based on availability of raw material and infrastructure facility, location of the business is to be selected. Financing. The proposition required of capital and its sources must be decided. Sixth point is physical facilities. Availability of physical facilities include machines and equipment, building, supportive services to be considered before starting a business. Seventh is plant layout. How much plant layout? Plant means आपका बिल्डिंग कैसी बनेगी मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस के लिए. प्लान लेआउट शुड बी ड्रॉ टू शो द अरेंजमेंट ऑफ दिस फैसिलिटी. एट पॉइंट इज कंपेटेंट एंड कमिटमेंट वर्कर. वर्कफोर्स. आपका वर्कफोर्स कैसा है, मतलब आपके वर्कर किस टाइप के हैं. एवरी बिजनेस नीड्स टू वर्कफोर्स सो केयरफुली प्लानिंग शुड बी अबाउट सिलेक्शन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय. टैक्स प्लानिंग आपकी कैसी है. टैक्स लाइबिलिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस टू आर considered. 10 point is launching the enterprise. After fulfilling the formalities, entrepreneurs can launch the business. Thank you for listening. Please subscribe our channel and hit the bell icon. You can contact me through the comment or likes for any information or required question about this chapter. Thank you for listening. Welcome.